Om Jnanam Timirandasya Jnana Shalakya Chakshuranandamena Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manovistam Sthapitam Yena Bhutale Swarupam Kadamayam Dadati Swapadartinam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagarjatam Sahaganda Gunathavitam Tam Sajivam Sadhavetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahaganda Shiv Sahagavetam Cha नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशदेश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कंचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। So we'll start from the Ashtanga Yoga. Yes, Swati Mataji. Hare Krishna. The Ashtanga Yoga system is also materialistic, in as much as it teaches one to control the movements of air within the material body. The spiritual spark, the soul, is floating on air within the body, and inhalation and exhalation are the waves of that air containing the soul. Therefore, the yoga system is a materialistic art of controlling this air by transferring it from the stomach to the navel, from the chest to the collarbone, and from there to the eyeballs, and from there to the cerebellum, and from there to any desired planet. The velocities of air and light are taken into consideration by the material scientist, but he has no information about the mind and intelligence. We have some limited experience of the velocity of um, we have some limited experience of the velocity of the mind, because in a moment we can transfer our minds to places hundreds of thousands of miles away. Intelligence is even finer. Finer than intelligence is the soul, which is no matter like mind and intelligence, but is a spirit or antimatter. The soul is hundreds of thousands of times finer and more powerful than intelligence. We can thus we can thus only imagine the velocity of the soul in its traveling from one planet to another. Needless to say, the soul travels by its own strength and not with the help of any kind of material vehicle. Thank you. Kanap. The bestial civilization of eating, sleeping, fearing, and sense gratifying has misled modern man into forgetting how powerful a soul he has. As we have already described, the soul is a spiritual spark which is many, many times more illuminating, dazzling, and powerful than sun, moon, or electricity. Human life is spoiled when man does not realize this identity with his soul. Lord Chaitanya appeared with his disciple Nityanand to save men from this type of misled civilization. Anushka Mataji. Hare Krishna Puri. Srimad Bhagavatam also describes how yogis can travel to all the planets in the universe. When the vital force is lifted to the cerebellum, there is every chance of this force bursting out from the eyes, nose, ears, etc., as these are the places which are known as the seventh orbit of the vital force. But the yogis can block out these holes by complete suspension of air. The yogi then concentrates the vital force in the middle position, that is, between the eyebrows. At this position, the yogi can think of a planet into which he wants to enter after leaving the body. He can then decide whether he wants to go to the abode of Krishna in the transcendental Vakuntas
from which he will not be required to descend into the material world or to travel to higher planets in the material universe. The perfect yogi is at liberty to do either. Hare Krishna. For the perfect yogi who has attained success in the method of leaving his body in perfect consciousness, transferring from one planet to another is as easy as an ordinary man's walking to the grocery store. As already discussed, the material body is just a covering of the spiritual soul. Mind and intelligence are the undercoverings. One second. The material body is just a covering of the mind and intelligence are the undercovering, and the gross body of earth, water, air, etc. is the overcoating of the soul. As such, any advanced soul who has realized himself by the yogic process, who knows the relationship between matter and spirit, can leave the gross dress of the soul in perfect order and as he desires. By the grace of God, we have complete freedom. Because the Lord is kind to us, we can live anywhere, either in the spiritual sky or in the material sky, upon whichever planet we desire. However, misuse of this freedom causes one to fall down into the material world and suffer the threefold miseries of conditioned life. The living of a miserable life in the material world by dint of the soul's choice is nicely illustrated by Milton in Paradise Lost. Similarly, by choice, the soul can regain paradise and return home back to Godhead. At the critical time of death, one can place the vital force between the two eyebrows and decide where he wants to go. If he reluctant to maintain any connection with the material world, he can in a less than a second reach the transcendental Vaikuntha and appears there completely in his spiritual body, which will be suitable for him in the spiritual atmosphere. He has simply to desire to leave the material world in both finer and grosser form, and then move the vital force to the topmost part of the skull and leave the body from the hole in the skull, called the Brahmarandhra. This is the highest perfection in the practice of yoga. Hare Krishna. Of course, man is endowed with free will, and as such, it does not want to free himself to the material world. He may enjoy the life of Brahmapada, occupation of the. I think you have शायद कल पढ़ चुके हैं. हाँ प्रभु जी, हम लोग पेज 34 भी पढ़ चुके हैं. मुझे वही लग रहा था. कोई बात नहीं. प्रभुपाद की बुक्स आप कितनी बार भी पढ़ ली, ऐसा लगता है कि नया है. तो जी यहाँ से स्टार्ट करना था. सॉरी, मेरे को याद नहीं कोई था. बात नहीं. ऑल गुड प्रभु जी. स्टार्ट करता हूँ. देखिए, सब किसी ने टोका नहीं आपको, इसका मतलब सब भूल गए थे कि वो पढ़ चुके हैं. They are instances in history of great personalities, including sages and kings, who attained perfection by this process. Some of them attained success even by adhering to one single item of devotional service with the faith and perseverance. Some of these personalities are listed below. Yes, Swati Mataji. I think Deepak Prabhu is also left. He's on listening mode today. He's not. Okay. Okay. So Emperor Parikshit attained the spiritual platform simply by hearing from such an authority as Sri Shukdev Goswami. Next. I think दो पॉइंट पढ़ सकते हैं माता जी, because it's so small. Okay. ठीक है. Shri Shukdev Goswami attained the same simply by recitation verbatim of the transcendental message which he received from his great father, Shri Vyasadeva. Emperor Prahlad attained spiritual success by remembering the Lord constantly in pursuance of instructions given by Shri Narad Muni, the great saint and devotee. Lakshmi ji, the goddess of fortune, Lakshmi ji, Lakshmi ji, the goddess of fortune, attained success simply by sitting and serving the lotus feet of the Lord.
This is actually Hello. very important. Prabhuji, can you copy this and share it later in the chat? Not Yeah. right now, but yeah, this is Okay. very good. Yeah. Okay. Okay. Namaskar, Mataji. King Prithu attained success simply by worshipping the Lord. Akrura, the charioteer, attained success simply by chanting prayers for the Lord. Yes, please continue, Mataji. Hanuman Mahavira, the famous non-human devotee of Lord Sri Ramachandra, attained success simply by carrying out the orders of the Lord. Arjuna, the great warrior, attained the same perfection simply by making friends with the Lord, who delivered the message of Bhagavad Gita to enlighten Arjuna and his followers. Yes. Kanak. Emperor Bali attained success by surrendering everything unto the Lord, including his personal body. These are 9 standard modes of devotional service to the Lord, and a candidate can choose to adopt any one, two, three, four, or all, however he likes. All the services rendered to the absolute are in themselves absolute, with none of the quantitative or qualitative differences found on the material platform. On the spiritual platform, everything is identical with everything else. Although there is transcendental variegatedness, Emperor Ambersea adopted all the above 9 items, and um, he attained perfect success. It was he who engaged in mind on the lotus feet of the Lord, his voice in describing the spiritual world, his hands in cleansing the temple of the Lord, his ears in submissively hearing the words of Lord Sri Krishna, his eyes in viewing the deities of the Lord, his body in touching the bodies of the devotees, his nostrils in smelling the flowers offered to the Lord, his tongue in tasting the food offered to the Lord, his legs in visiting the temple of the Lord, and all the energy of his life in executing the services of the Lord without in the least desiring his own sense gratification. All these activities helped him attain the perfect stage of life which defeats all dexterities of material science. Hare Krishna. Prabhuji. It is therefore important for all human beings to adopt this principle of spiritual realization for the perfection of life. Human beings' only obligation is spiritual realization. Unfortunately, in modern civilization, human society is too busy in discharging national duties. Actually, national duties, social duties, and humanitarian duties are obligatory only to those who are bereft of spiritual duties. As soon as those, as soon as a man takes his birth on his earth, not only does he have national, social, and humanitarian obligation, but he also has obligation to the demigods who supply air, light, water, etc. He also has obligation to the great sages who have left behind them vast treasure houses of knowledge to guide him through life. He has obligation to all kinds of living forth and so on. But as soon as one engages himself, sorry, living beings to his, he has obligation to all kinds of living beings, to his forefathers, family member, and so forth and so on. But as soon as one engages himself in one single obligatory duty, the duty of a spiritual perfection, then he automatically liquidates all other obligations without having to make separate efforts. Haribol. That's good. Yeah. A devotee of the Lord is never a disturbing element in society. On the contrary, he is a great social asset. Since no sincere devotee is attached to sinful actions, as soon as a man becomes a pure devotee, he can do inestimable selfless service to the society for the peace and prosperity of all concerned in this life and in the next. But even if such a devotee commits some offense, the Lord Himself rectifies it in no time. Therefore, there is no need for a devotee to cultivate materialistic knowledge, nor does a devotion need to renounce everything and live as a hermit. He can simply remain at home and execute devotional service soothingly in any order of life. And there are instances in the history of extremely
cruel man becoming kind-hearted simply by execution of devotional service. Knowledge and abnegation of any inferior way of life follow automatically in the life of a pure devotee without his making to without his making to extraneous efforts. Hare Krishna. Hare Krishna. The spiritual art and science of devotional service is the highest contribution of Indian sages to the rest of the world. Therefore, everyone who has taken his birth in India has an obligation to perfect his life by adopting the principles of this great art and science and distributing it to the rest of the world, which is still ignorant of the ultimate aim of life. Human society is destined to reach the stage of perfection by gradual development of knowledge. Indian sages, however, have already reached that position. Why do others have to wait for thousands and thousands of years to attain their heights? Why not give them the information immediately in a systematic way so that they may save time and energy? They should take advantage of a life for which they may have labored millions of years to attain. So, A Russian fiction writer is now contributing suggestions to the rest of the world that scientific progress can help men to live forever. Of course, he does not believe in a supreme being who is the creator. Yet we welcome his suggestion because we know that actual progress in scientific knowledge will certainly take men to the spiritual sky and inform the scientists that there is a supreme creator who has full potencies beyond all materialistic scientific conceptions. yes, As mentioned, every living being is eternal in form, but he has to change his outer coverings, gross and subtle, and this changing process is technically known as life and death. As long as a living being has to put on the shackles of material bondage, there is no relief from this changing process, which continues even in the highest stage of material life. The Russian fiction writer may speculate as fiction writers are apt to do, but saner people with some knowledge of natural law will not agree that man can live forever within this material world. A naturalist can see the general course of material nature simply by studying a piece of fruit. A small fruit develops from a flower, grows, stays for same time on a branch, becomes full grown, ripens, then begins to dwindle daily until it finally is fall from the tree and commences to decomposes into the earth and at last mingles with the earth, leaving behind its seed, which in its turn grows to become a tree and produces many fruits in time, which will all meet the same fate, and so on. Hare Krishna. thank you. Lovely, thank you. Hare 1 Krishna. second. हाँ प्रभु जी मेरा एक पिंग आ गया था 1 second. Similarly, a living being अरे यार ये ऑफिस आ रहा है. Similarly, a living being is a spiritual spark, a part of the supreme being, takes its organic form in the womb of a mother just after sexual intercourse. It grows little by little when the womb is born, then continues growing, becomes a child, boy, youth, adult, old man, then finally dwindles and meets death. Despite all the good wishes and hopeful pipe dreams of fiction writers, in comparison, there is no difference between man and the fruit. Like the fruit, the man may leave behind him his seeds of numerous children, but he cannot exist eternally with his material body due to the law of material nature. You should be. How can anyone ignore the law of material nature? No material scientist can change the stringent law of nature. However boastful may be, no astronomer or scientist can change the course of the planet. He can only manufacture a planetary toy planet, which calls us as a light. Foolish children may be impressed by this and may give a great deal of credit to the investor of modern scientists, satellites and Sputniks, etc. But the saner section of humanity gives more credit to the creator of the gigantic satellites, namely the sun, stars, and planets of this
of which the material scientists can see no end. If a small toy has a creator in Russia or America, it is responsible that the gigantic satellites have their creator in the spiritual sky. If a toy satellite requires so much scientific brains for its manufacturing and its orbiting, what kind of subtle and perfect brain created galaxy of stars maintains them in their orbits? Thus, so far, for the atheistic class, I am no able to answer to this. Hare Krishna. Non-believers put forward their own theories of the creation, which usually result in statements such as "It's hard to understand. Our imagination cannot conceive it, but it's quite possible. It is incomprehensible," and so forth. This only means that their information has no authoritative basis and is not backed by scientific data. They simply speculate. However, authorized information is available in the Bhagavad Gita. For instance, the Bhagavad Gita, sorry, inform us that within the material world there are living beings whose duration of life covers 40, 43 lakhs. Forget it. You're saying something, Suji? I'm saying forget reading it. Okay. Yes. We accept the Bhagavad Gita as authority because this book of knowledge was so accepted by India's great sages like Shankaracharya, Sri Ramanujacharya, Sri Madhavacharya, and Sri Chaitanya Mahaprabhu. The Bhagavad Gita indicates that in the material world, all component forms are subject to decay and death, regardless of the duration of life. Therefore, all material shapes are subject to the law of change, although potentially the material energy is conserved. Potentially everything is eternal, but in the material world, matter takes shape, remains for some time, develops into maturity, grows old, begins to dwindle, and at last disappears again. This is the case with all material objects. The materialist suggestion that beyond the material sky there is some other form which is beyond the boundary of visibility and which is strange and inconceivable is but a faint indication of the spiritual sky. However, the basic principle of spirit is much closer, for it functions within all living beings. When that spiritual principle is out of the material body, then the material body has no life. Within Within the body of a child, for instance, the spiritual principle is present and therefore changes takes place in the body and it develops. But if the spirit leaves the body, the development stops. This law is applicable to every material object. Matter transforms from one shape to another when it is in contact with spirit. Without spirit, there is no transformation. The entire the entire universe develops in that way. It spiritual energy transcendence because of the spiritual force which is his, and it develops into gigantic forms like the sun, moon, earth, etc. There are 14 divisions of planetary systems, and although they are all different in dimension and quality, the same principle of development holds true for all. The spiritual force is the creator, and by this spiritual principle only, transformation, transition, and development takes place. And life is definitely not generated simply by a material reaction like a chemical combination, as many foolish men claim. Material interaction is set in motion by a superior being who creates a favorable circumstance to accommodate the spiritual living force. The superior energy handles matter in an appropriate way, as determined by the free will of the spiritual being. For example, building materials do not automatically react and suddenly assume that the shape of the residential house. The living, the living spiritual being handles matter appropriately by his free will and thus constructs his house. Similarly, matter is the ingredient only, but the spirit is the creator. Only a man with a poor fund of knowledge avoids this conclusion. The
The creator may remain unseen in the background, but that does not mean that there is no creator. One should not be illusioned simply by the gigantic form of the material universe. Rather, one should learn rather one should learn to discern the existence of the supreme intelligence behind all these material manifestations. The supreme being, who is the supreme intelligence, is the ultimate creator, the all attractive personality of Godhead, Sri Krishna. Although one may not be aware of this, there is definite information of the creator given in the Vedic literatures such as Bhagavad Gita and especially the Srimad Bhagavatam. When a satellite is thrown into outer space, a child may not understand that there are scientific brains behind it. But an intelligent adult realizes that scientific brains on Earth are controlling the satellite. Similarly, less intelligent persons do not have information of the Creator and His eternal abode in the spiritual world, which is far beyond our range of visibility. But in actuality, there is a spiritual sky and spiritual planets, which are more spacious and greater in numbers than planets in the material sky. From the Bhagavad Gita, we receive information that the material universe only constitutes a fraction, one-fourth of the creation. Such information is extensively available in the Srimad Bhagavatam and in other Vedic literatures. Hare Krishna. So should we continue or you want to stop here? We can stop. Yeah. What is the page number? 46. Okay. Yeah. So we can start with the realization of this section. Swati Mataji. Hare Krishna. So, first point, I would say, jahan we Prabhupada were talking about different obligations. Ki, when we take birth here in the material world, we have different kind of obligations towards our family, society, and our country, and in fact we have obligations, the sages also, जिन्होंने हमें इतनी scriptures दिए हैं और knowledge दिया है, तो हमारे पास different kind of obligations होते हैं. But if for a pure devotee there is no obligation, तो वो already भगवान की service में लगे हुए होते हैं pure devotees, तो उनको ये सब obligations की need नहीं होती है. So that was first point. And another is Prabhupada is all talking about the how the spirit soul is important. मतलब वो अगर body से जैसे ही spirit soul disappears, तो matter की या body की कोई value ही नहीं रहती है. Because and there are scientists who actually don't believe on this कि God exist करते भी हैं, तो उनके according this is all the chemical constitution actually. So जो प्रभुपाद actually यहाँ पे explain कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है. और he was I mean at the last he was talking about the spirit soul actually. तो कि उसकी मतलब जैसे निकल मतलब कोई बॉडी की फिर वैल्यू नहीं रहती है या मैटर की वैल्यू नहीं रहती है, तो वो चीजें प्रभुपाद यहाँ पे मेनली एक्सप्लेन कर रहे हैं. दैट वाज माय रियलाइजेशन. Thank you. Anushka Mataji. जी प्रोजे एक पॉइंट आया था बीच में जब प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जैसे नॉन बिलीवर्स जो होते हैं वो ये चीज़ कि मतलब वो कोई भी चीज़ नहीं समझ आती तो उसमें बोल देते हैं कि ये इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड या इस तरह से बोल देते हैं. बट ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन क्योंकि उनके पास कोई अथॉरिटेटिव वो नहीं है, कोई Reference.
हाँ हाँ जी, कोई रेफरेंस नहीं है कि वो बता पाए कि तो इसलिए, लेकिन बट ऑलरेडी हमें समझना चाहिए कि ऑलरेडी सारी चीजें भगवत गीता या भागवतम में दे रखी हैं, तो हम उन्हें ही क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते अल्टीमेटली। थैंक यू माधव जी। कनक, Kanak, are you there? Okay. Naveen Prabhuji. Okay, प्रभुजी, हरे कृष्णा। प्रभुजी, मैं तो जब ये पढ़ रहा हूँ तो मेरा क्या बोलते हैं ना, वो मुंह खुलकर रह जाता है, या like what I mean, more than realization, I just think like when Prabhupada is writing, like so much knowledge, as to, like literally it's beyond my mind my mind can conceive. It's not the talk only about, right, devotional life. Here he's talking about all the scientific, and he's putting all the arguments, and मैं सोचिए, एक्चुअली मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग. Yes. That is my reflection, but I can talk about those that really where Prabhupada talk about never क्या बोलते हैं अपना 9 वो रहता है ना अपना श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, right? So these are the 9 processes of bhakti where and he gave the example of all the devotees like Parikshit Maharaj and also. That was really nice and something my mind was able to conceive. Yes. After one point, it was मैं यही सोच रहा था कि I mean, this is how I mean, Prabhupada was not a science student. He did not go to any science. He didn't do any research or anything. But look at it, the way he has put the argument, the way he has put it, it just takes my mind. It just blows my mind, Prabhuji. Yes. Yeah, that's the only realization I have. Yeah. Can feel the same, Prabhuji. The example of satellites and everything. Can you believe? Yeah. At least ये है कि ISKCON मतलब लिमिटेड नहीं है, अदर रिलीजियस सेंटिमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ISKCON is beyond that. Yeah. Prabhupada has given us everything related to universe. Whatever the universe have, Prabhupada have transmitted it to us in a very simplified way. Yes. It just and that's why anybody who reads will be attracted to it. It's just wonderful. Yeah, where is the issue? Issue will make some good probably feedback. Issue Prabhu went to temple. Acha. Left already. Okay. Ashwin Prabhuji, I think he joined late, but I don't know if he wants to make some points. हरे कृष्णा. मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes. हाँ प्रभुजी बिल्कुल आ रही है. Okay. मैंने ज्वाइन किया जहाँ पे वो सोलर ईयर्स के बारे में बता रहे थे कि इतना एज रहता है. अगर हम देखें तो अर्थ जिस पे हम हैं आज, वो एक फुट की तरह है. ऊपर 7 है जो प्लैनेट्स है, नीचे 7 है प्लैनेट्स हैं. तो हेवनली प्लैनेट्स में भी अगर हम देखें तो बोलते हैं भक्ति के लिए जो है वो अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सुख बहुत ज्यादा है. स्पेशली लक्ष्मी है, वुमेन है, इसका सुख बहुत ज्यादा है. अर्थ पे क्या है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है तब आपको लक्ष्मी मिलेगी. वहाँ पे तो बह रहा है, कोई ज्यादा खास हार्ड वर्क करना पड़ता नहीं है, वो बह रहा है. जैसे हम अर्थ पे भी देखें, कोई अमीर व्यक्ति का बच्चा है, अमीर व्यक्ति ने मेहनत किया, बहुत इकट्ठा कर लिया, तो जो उसका बच्चा है उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसे ऑटोमेटिकली अवेलेबल है. तो उसके लिए भक्ति उतनी ही डिफिकल्ट है क्योंकि वो सुख में बहुत ज्यादा है. तो 7 हेवनली प्लैनेट्स जो हैं, इतना सुख है वहां पे कि वो भी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है. 7 हेलिश प्लैनेट्स जो है वहाँ इतना दुख है, वहां भी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है. तो फर्स्ट पॉइंट इज कि अर्थ पे ही वो भक्ति की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर है, बहुत ज्यादा दुख भी नहीं है, बहुत ज्यादा सुख भी नहीं है. कहने को तो हम कहते ही हैं दुखालयम शाश्वतम, तो दुख की कमी भी नहीं है. बट उस सेंस में देखा जाए तो थोड़ा बहुत सुख भी है, अनुकूल परिस्थिति है अर्थ पे. पॉइंट है कि जब भगवान
देख रहे हैं कि चलो ठीक है भाई, यहाँ पे इतने सारे जीव हैं सारे प्लैनेट्स में, हेलिश और हेवनली प्लैनेट्स, फिर भी भगवान का एक स्पेशल अट्रैक्शन ऐसा लगता है अर्थ के लिए कि जब हरिनाम प्रभु के रूप में भगवान आते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से वो हरिनाम भेज रहे हैं, तो हेवनली प्लैनेट में किसी को भी एक्सेसिबल नहीं है हरिनाम से, सीधा जाके बोलते नहीं अर्थ पे मैं भेज रहा हूँ इसको। बीच के लोग अगर बोल भी रहे होंगे नहीं नहीं हमें कैच करने दीजिए, नहीं 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 नहीं, दिस इज ओनली फॉर earthly planets, earth planet. And in earth planet also there are billions of people, and I'm talking about only human beings. कितने और भी जीव होंगे, छोटे मोटे मॉस्किटोज भी होंगे, बड़े बड़े व्हेल मछली जैसे भी जीव होंगे, बट उन सब में भी भगवान ह्यूमन बींग्स को कैच करके बोले कि नहीं इनको हरिनाम अवेलेबल मैं कराता हूँ। उन ह्यूमन बींग्स में भी सबको एक्सेसिबल नहीं है, सबको कृपा नहीं मिल रही है। बहुनाम जन्मनाम मानते हैं, जिन्होंने सफिशिएंट कर्म इकट्ठा, पुण्य कर्म इकट्ठा कर लिया है, उनको बोलते नहीं इनका भक्त स्वीकृति हो गया, अब इनको एक्सेसिबल मैं कराता हूँ ये हरिनाम। फिर उनमें भी सबका फेथ नहीं आ रहा है, कुछ कुछ सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, बस थोड़ा बहुत नहाते गाते कीर्तन चला लिया बस। उनसे बोले आप चैंटिंग करते हैं, नहीं वो तो हमारा हमेशा चलता रहता है, मन में चलता रहता है बस। नहीं नहीं आप बैठ के 1 घंटा कर लिए, ना ना उतना नहीं, वो उसकी जरूरत नहीं है, चलता रहता है। तो और फिर उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो रेगुलर नहीं कर रहे हैं, बट उनमें भी जो रेगुलर कर रहे हैं फिर उनका फेथ भगवान बनाते हैं धीरे धीरे। तो हम देखते हैं कि हरि नाम इतना सब, इतने 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 लोगों में हम देखें, पहले तो 7 हेवनली प्लैनेट हेलिश प्लैनेट्स करके पहले अर्थ, फिर अर्थ में भी इतने ह्यूमन बींग्स में से कुछ, फिर करते करते बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन रह जाता है जो हरि नाम के माध्यम से भगवान को पा सकता है। वरना तो ब्रह्मा की 16 ईयर्स तक एज बताते हैं कि युग बीतने पे तब ब्रह्मा की एज कंप्लीट, उनको भी एक्सेसिबल नहीं है। पद्यावली में रूप गोस्वामी लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति ये सोचता ही है कि मुझे हरि नाम करना है, जस्ट अभी वो सोच ही रहा है, उसने शुरू ही नहीं किया है, तो ब्रह्मा जी हाथ में जल लेके इकट्ठा हो जाते हैं आचमन करने के लिए, रेडी हो जाते हैं कि अभी तो उसने सोचा है। तो उसके शरीर के सारे अपराध कांपने लगते हैं ना, जैसे वो सोचता है कि मुझे हरि नाम करना है, तो फिर करने लगेगा ये, इसके अपराध खत्म होंगे। तो कहते हैं बहुत जल्दी ही ना अब ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने वाला है, तो अपना आचमन इकट्ठा कर लेते हैं, देवी देवता तक तो की टोकरी इकट्ठी कर लेते हैं, बोले नहीं अब इधर से निकलेगा तो हम इसके ऊपर फूल बरसाएंगे। So the point is in our devotional service, like Naveen Prabhu was also sharing, Shravanam and Kirtanam is the basis of everything. We Shravan these Harinam and all the devotional service lectures, and then we do Kirtanam. This becomes so important that even this point, the Shravanam Kirtanam is not even accessible to demigods, what to talk about the living entities in hellish planets, what to talk about the other living beings on our earthly planet. So I think all Vaishnavas can give me also blessings. So I also did develop that faith in Harinam, and we make, all of us will make our life perfect. Thank you, Udit bro. Thank you, Prabhuji. It was very amazing to you make us realize the importance of Harinam. Connect more to it. Connect. हरे कृष्णा प्रभु जी मेरा एक डाउट था, जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं कि आपका वैकुंठा से फॉल डाउन नहीं हो सकता अगर आप एक बार यहाँ से चले गए तो लेकिन हमारा कहीं से तो फॉल डाउन हुआ है ना, जो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आया है, तो हमारा फॉल डाउन हुआ कहाँ से है? हाँ मतलब वो प्रभुपाद बताए हैं कि एक बार तो फॉल डाउन हमारा उधर से ही हुआ है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही। लाइक वी वांटेड टू इमिटेट कृष्णा, सो कृष्णा सेड ओके दिस इज द मटेरियल वर्ल्ड, यू गो एंड एंजॉय। बट इस बार माया पूरा एग्जाम लेके ही वापस जाने देगी। अब इसलिए माया जो है ना वो बनाए गए यहाँ पे कि अब इसकी एंट्री दोबारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तभी होगी जब इसे पूरा रियलाइज हो जाएगा कि ही कैन नॉट एंजॉय सेपरेटली। इसलिए बोलते हैं ना भगवान भगवत गीता में कि इस बार ही मेरे पास आएगा तो अब नहीं जाएगा, क्योंकि अब पूरा टेस्ट लेके भेजा जाएगा इस बार जाना बहुत आसान नहीं है एक्चुअली। हाँ राइट राइट एक्चुअली करेक्ट है ना, जाते करेक्ट टाइम बताइए। इतने टेस्ट होंगे, मरने के बाद भी देयर विल बी यू विल बी गिवन सो मेनी, क्या बोलते हैं उससे प्रभु जी, एल्योरमेंट्स, इतना ज्यादा चीजें मिलेगी ना रास्ते में वापस जाते टाइम भी कि लास्ट डेस्टिनेशन से पहले तक भी आदमी फॉल बैक कर सकता है।
हाँ, तो दिखाते ही लेके चलते हैं ना, इसलिए वो कुमार की कथा होती है, उसे दिखाते ही लेके चलते हैं, देखो भाई ये आ गया, इंद्र का सिंहासन चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। तो थोड़ा और ऊपर उठेंगे, देखेंगे ब्रह्म लोग, देखो कितना मजा आ रहा है यहाँ पे, सब देख लो। अरे नहीं नहीं, ये भी नहीं चाहिए, तब जाके वो कहीं ऊपर उठ पाएगा। हाँ, तो बट माता जी प्रभु जी ऐसा है जैसे कि बोलते हैं कि वो, वी फॉरगेट, हम भूल जाते हैं, तो अगर ऐसा हाँ वो मरने के बाद भूल गए फिर हाँ हाँ, ये नहीं बोलते क्या हैं ना कि क्वेश्चन है, भूल जाते हैं मतलब? हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे क्या कर्म भूले आज हुए थे, हैं जैसे भगवान अब को। हम पिछले जन्म का कुछ याद ही नहीं है, था भी या नहीं, मतलब वी डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। तो अगर वो हाँ ही हाँ मरने के बाद भूल गए फिर हाँ, कैसे होगा? भूल गए, क्या भूल गए कि मतलब मैंने भक्ति की है? हाँ एग्जैक्टली। कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, बनने का फिर भूल गए। नहीं, भक्ति का लॉस तो कहाँ होता है? आप जैसे मान लीजिए, आप देखते हैं ना कोई नया नया व्यक्ति भी जुड़ता है इस्कॉन में, कुछ टाइम में वो 16 माला करने लगता है, कुछ टाइम में सुपर प्रीचर बन जाता है, और कुछ मेरे जैसे थर्ड क्लास भी होंगे, टाइम लगा रहे हैं भक्त बनने में। तो हम मतलब वैसे वो उनका पुराना भक्ति सुकृति है, भक्ति उन्होंने पुरानी की हुई है, इसका मतलब क्या है ना, भक्ति का लॉस नहीं होता। और सेकंड पॉइंट इज कि जैसे हम अजामिल की कथा में सुनते हैं, जैसे अजामिल क्या थी कि ये कि भक्ति करते रहे करते रहे करते रहे, जब शरीर छोड़ा तो खुद विष्णुदूत आके उनको लेके जा रहे हैं अभी। तो वो तो शुद्ध भक्त यहीं बन जाता है। तो जब वो शरीर छोड़ता भी है, तो ऐसा नहीं है कि अभी उसकी जो स्पिरिट सोल है वो कॉन्टेमिनेटेड है, जैसे हमारी अभी कॉन्टेमिनेटेड है, राइट? तो हम क्या करते हैं, उन डिजायर्स को लेके नेक्स्ट बॉडी पाते हैं, समझ में आ रहा है? पर जो शुद्ध भक्त हो गया है, उसकी डिजायर्स पूरी शुद्ध हैं, अब उसे स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है। तो जब स्पिरिचुअल बॉडी उसे मिल गई, इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह प्योरीफाई हो चुका है, अब वो अल्यूरमेंट में जाएगा भी नहीं। वो तो एक प्रोसेस है कि चलो ठीक है, बैकुंठा दूत आए लेके जा रहे हैं, बट ऐसे किसी का सुनते नहीं है कि कोई किसी को ऐसे लेके जा रहे थे विष्णुदूत और उसका फॉल डाउन हो गया। जनक महाराज थे जैसे, वो गए थे यमराज जी से मिलने, बट फॉल डाउन थोड़ी ना हुआ था, यमराज जी ने बुलाया था उनको कि नहीं नहीं, शुद्ध भक्त जा रहे हैं, जरा मैं मीटिंग करवा दो मेरी। हम्म। ओके प्रभु जी, वो तो थैंक यू। रेयर, ऐसा कोई आता नहीं है कोई ऐसी कथा जिसमें कोई शुद्ध भक्त जो है भगवान का लेके जाया जा रहा है और उसका फॉल डाउन हो गया, अनलेस अनटिल भगवान की ही डिजायर ना हो उसमें, जो कि बाद में शास्त्रों में बताते भी हैं कि नहीं ये मेरी डिजायर थी जिसकी वजह से तुम ऐसा किया, फॉल डाउन नहीं होता उसमें। हाँ, ओके प्रभु जी, थैंक ये यू क्लियर प्रभु नहीं जी। होना वो कनक वाले? नहीं नहीं प्रभु जी, क्लियर है मुझे। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ओके। कन्विक्शन नहीं आ रहा है। अब तो हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा दिख, आपकी आवाज आ रही है माता जी? ओके ओके प्रभु जी, क्लियर है, कोई ऐसा मतलब मेजर डाउट नहीं है, मतलब वो पढ़ते पढ़ते आ जाता है, ये सब चीजें हम सुनते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, तो पढ़ते पढ़ते फिर क्लिक होता है वो डाउट कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा कोई मेजर हाँ, डाउट नहीं है। मैं गुरु महाराज की लेक्चर में एक बार सुन रहा था कि जो पुराना जन्म याद नहीं रहता है ना, तो बोले ये बड़ा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है एक्चुअली हमारे, एक तरह से देखा जाए तो। मतलब अगर हमें पुराना पुराना जन्म याद रहे कि देखो मैं पुराने जन्म में था, चींटी था, तो मैं बहुत सारे चीनी के दाने इकट्ठे करता रहता था, ढोता रहता था चीनी के दाने में, ताकि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। और फिर एक दिन बस ऐसी हवा का झोंका आया और मैं बच्चों से बिछड़ गया, फिर उसके बाद किसी ने मेरे ऊपर पैर रखा। जब से इतना कष्ट याद आएगा तो ऐसे लगेगा नहीं मैं फिर से चीनी के दाने क्यों इकट्ठे कर रहा हूँ इस जन्म में भी। हाँ, ऐसे करके मतलब फिर वो शायद भक्ति करने लगे। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अगर ऐसे याद आएगा ना, मैं शेर था, स्ट्रगल करता था खाने के लिए, हिरन को मैं खाया, उसने मेरे मुंह पे लात मारी जब मैं खा रहा था उसको। तो ये सारा स्ट्रगल ऐसे याद आता रहेगा ना, तो उसे पूरा एक रियलाइजेशन होगा कि नहीं यार मैं तो बड़ा ये पतित व्यक्ति हूँ। अभी तो कहने के लिए अरे प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए मैं बहुत पतित हूँ। जो याद रहेगा मेरे पुराना जन्म, उसे एक्चुअली पता चलेगा कि मैं पतित हूँ, हम शायद भक्ति कर पाएगा। एक्चुअली हमें याद नहीं है ना, दुर्भाग्य है हमारा। मेरा एक और डाउट था। ठीक है जी। हरे हाँ जी। तो मतलब कभी कभी मेरे माइंड में आता है कि जैसे हमें हमारी जो डिजायर है, स्पेशली मटेरियल डिजायर्स जो होती हैं, अगर वो रह जाएंगी और वो कहीं ना कहीं हमारे मन में रहेगा भी, तो फिर वी विल कैरी दैट इन आवर नेक्स्ट लाइफ। तो कभी कभी ऐसा आता है कि फिर
इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्पिरिचुअली भी प्रोग्रेस करते करते अगर मटेरियल डिजायर है तो हम उसे भी फुलफिल अभी कर लें। नहीं, बट फिर भगवान नहीं कह रहे भगवत गीता में कि फुलफिल करेंगे तो घी का काम करेगी, बढ़ती जाएगी, वो खत्म नहीं होगी। अजीब ही है थोड़ा। पहले मैं भी सोचता था यार, एक्चुअली वो अच्छा पॉइंट। पहले मुझे ये लगता था कि अरे ठीक है, तभी तो कुछ लोग बोलते हैं ना संसार में, कहते हैं ये सब तो बुढ़ापे की चीज है। इसका मतलब उनका भी पॉइंट यही है कि भैया पहले अपनी सारी डिजायर खत्म कर लो, बुढ़ापे में करना ना भक्ति आप। उनको लगता है बुढ़ापे में ड्राई हो जाएगा व्यक्ति, और जब ड्राई हो जाएगा तो सिर्फ भक्ति पे ध्यान दे पाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। भगवान खुद ही बोलते हैं सेकंड चैप्टर में कि नहीं, मेटेरियल डिजायर को पूरा करना आग में घी डालने ही जैसा है। आप डाले फिर बढ़ गई, फिर डाल फिर बढ़ गई, फिर डाले फिर बढ़ गई। बॉलीवुड का एक्टर है कि उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो बहुत अच्छा कॉमेडियन भी है। तो वो बता रहा था कि उसने इसी इंटेंसिटी से ही सोचा कि मैं दूसरी स्त्री का भोग करूंगा तो मेरे अंदर डिजायर चली जाएगी। उसने रिकॉर्ड बनाया है उसमें, कुछ 2500 वुमेन के साथ बोले संग किया हुआ। तो वो अब पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो रखा है, पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो रखा है वो। अम, ये हमारा अपना एक्सपीरियंस भी है। मान लीजिए हम सोचते हैं कि चलो खाने के डिजायर है, मान लीजिए मेरे अंदर कि नहीं मैं खाना है, मुझे जैसे खीर पसंद है। अब खीर खाइए 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 खाइए, पेट भर जाएगा, पेट फटने को तैयार है, बट डिजायर ही खत्म नहीं हो रही है और बढ़ रही है। फिर और खीर खाने का मन करेगा। तो हैं? बेसिकली मतलब जैसे अगर हम एकादशी खत्म होता है तो क्या होता है, हाँ, नहीं नहीं कंटिन्यू करिए। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे क्या होता है कि कुछ भक्त बोलते हैं कि हम, एक तो ये पॉइंट आ गया कि भाई मटेरियल डिजायर आप ज्यादा अगर उसको कंप्लीट उस पे अगर आप एक्ट करते हैं तो मटेरियल डिजायर आपकी ज्यादा बढ़ेगी। दैट इज वन। सेकेंडली, जो ड्राई रेनंसिएशन है वो भी काम नहीं करेगा, विच मीन्स अगर हम सिर्फ नो नो बोलें और भक्ति ना करें तो टेस्ट नहीं आएगा। तो क्या होगा कि जैसे ही वो ड्राई रेनंसिएशन का पीरियड खत्म होगा, हम तुरंत बहुत ज्यादा भोग करेंगे, क्योंकि दूसरे कृष्ण का टेस्ट नहीं लिया ना। जैसे एकादशी में, अब जैसे एकादशी में क्या है, मान लीजिए कुछ लोग निर्जला रखते हैं। निर्जला रखना तो बहुत ही अच्छी बात है, पर निर्जला का पर्पज ये है कि भगवान की भक्ति की जाए। बट अगर हम ऑफिस का काम करते रहेंगे 24 घंटे मान लीजिए, तो अगले दिन और ज्यादा खाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। फिर इसका कोई पर्पज नहीं है। करेक्ट ना? दैट इज मतलब ड्राई ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का पर्पज तो कृष्ण भक्ति है। करेक्ट ना? तो इसलिए जो भी टू मच मटेरियल डिजायर्स फुलफिल करना, ये भी डेंजरस है। और बिल्कुल डिजायर मटेरियल नहीं फुलफिल करना, वो भी डेंजरस है। क्योंकि जैसे ही आप जीरो कर दिए मटेरियल डिजायर फुल करना, तो अभी हम उतने स्ट्रांग नहीं है कि पूरी तरह से कृष्णा से भर पाए। आप समझ रहे हैं? इसलिए वो प्रॉपर गाइडेंस में ही जाना चाहिए। कई बार भक्तों को मना कर देना, वो कहते हैं, मुझे निर्जला रखना। आप बोले आप निर्जला मत रखिए, आप पूरे दिन सोएंगे, आप मत रखिए। जो पूरे दिन सोएगा वो निर्जला क्यों रख रहा है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो मना कर दिए थे अपने मठ में। जब उनके एक बोले थे, वो एक डिसाइपल को बुलाए, बोले उसे भेजिए प्रीचिंग के लिए जाना है। दूसरे डिसाइपल बोले नहीं, एक्चुअली वो निर्जला रखता है ना, तो वो सो रहा है, थोड़ा रेस्ट कर रहा है, थका हुआ फील कर रहा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे उनको फुल प्रसादम दे दीजिए, आप इमीडिएटली उठाइए, फुल प्रसादम दीजिए, बोलिए मेरे साथ चलेगा वापस प्रीचिंग करने के लिए। प्रीचिंग इज द एसेंस। सेकेंडली, बॉडी रेडी नहीं है तो क्या कृष्ण भक्ति करेंगे? हर ऑस्टेरिटी का पर्पज ही कृष्ण भक्ति है। इसलिए जो भी ऑस्टेरिटी है, मटेरियल डिजायर जीरो करने पे भी डेंजरस है। अभी हमारी वो स्टेज ही नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं, नेति 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 तो मायावादियों का काम है। मैं नहीं, ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे साथी? नहीं नहीं बस मैं यही बोल रही थी कि फिर मतलब डिसाइड कैसे करना चाहिए कि ये वाली डिजायर मतलब ठीक है हम ये तो भक्ति में काउंसलिंग का प्रोसेस ही है। ये तो काउंसलिंग का प्रोसेस ही है, वही बताएगा कि क्या करना ठीक रहेगा। सही बता रहा हूँ, मतलब क्योंकि क्या हो रहा है, शास्त्र भी बहुत वाइड है। अब शास्त्र में बोल दीजिए, बोलते कि एकादशी का फर्स्ट रखिए फुल, मतलब निर्जला, ठीक है। अब हमने कहा हाँ हाँ निर्जला मतलब ठीक है, निर्जला ही रखूंगा मैं। और मैं निर्जला रख के सो गया। मैं सोए जा रहा हूँ 12 घंटे 18 घंटे, और फिर अगले दिन मैं अच्छा जो प्राउड आ गया कि मैंने कल निर्जला रखी थी। इसका क्या बेनिफिट है? निर्जला का पर्पज ये है कि हम अपनी ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग ये कम करें ताकि हम भक्ति कर सके उस दिन ज्यादा। वो हुई नहीं।
तो इसलिए जो गाइडेंस में रहेंगे तो गाइडेंस वाला व्यक्ति जो है अच्छे से बता पाता है कि नहीं आपको ये सूट करता है, आप इतना कीजिए। वो कभी नहीं कहेगा कि आप 24 घंटे कीजिए, उसे पता है कि अभी 2 घंटे का इसका चैंटिंग का ही स्ट्रगल है, तो कहेगा कि नहीं ठीक है आप 2.5 घंटे कीजिए, 4-5 माला ज्यादा कीजिए, दैट्स ऑल। खुद से तो मन कुछ भी कहानी बना लेता है। हाँ, तभी तो एक भक्त कह रहे थे कि ये शत्रु, में कि कोई शत्रु है ही नहीं, हमारा हमारा मन ही शत्रु है। करेक्ट। right. मन को आप साइड में करिए, आप बोले नहीं मैं मन की सुनूंगा ही नहीं, आप बताइए क्या करना है, कहिए आप ऐसा कीजिए, आप ऊपर से छलांग मार दिए। वो कौन थे ना, अपने शिष्य को बोले थे तुम्हें गंगा का एक लोक नहीं आता, जाओ तुम छलांग लगा दो ऊपर से पहाड़ी से। वो पहाड़ी से छलांग लगाए, गंगा में कूद गए। फिर गंगा जी ने गोद में रख के उनको सारी गंगा स्तुति सुनाई और इनको मैं मेमोराइज करवाई, तब निकल के अपने गुरु को सुना रहे थे। मन तो कुछ भी करता है। Right. बट करेक्ट ना नवीन को? यस प्रभु, नवीन को करेक्ट करेंगे मेरे को, नवीन प्रभु मैं अगर गलत बताऊं तो। ऑफिस था प्रभु जिनका, वो चले लेफ्ट। ड्रॉप हाँ। ओह अच्छा अच्छा, ओके। प्रभु जी मेरा भी एक डाउट था, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम परमिट नहीं कर रहा है, तो आई थिंक हम ऑफलाइन डिस्कस कर सकते हैं। हरे ओके कृष्णा। श्योर। यस प्रभु जी। Okay, so we'll stop now. Vancha kaltruvesha pasandaya पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभात की जय। Jai.